Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. This is the next video on C programming series. This video is a continuation of the last video in a series. So if you haven't watched the earlier videos, I recommend you to go through those videos to know what has already been covered. And please do not forget to like, share and subscribe to the channel to receive the updated new videos. Now, what is the agenda of this video? Up till last video, we have covered until the loops in C language. In this video, we shall go through the infinite loops and common logical errors which you should be avoided while coding loops. I know we have one more part of loops which is nested loops, but I've kept that topic for multi-dimensional array. Okay. Now, what are infinite loops? I'm not going to go through all this theoretical stuff what I've kept it on the slide, but yes, I'll maybe try to put it in very short. At an infinite word itself means without an end, right? So in simple words, a never ending loop is called as infinite loop, a simple word, right? So other terminologies which are used for infinite loops are indefinite loop or an endless loop. So indefinite loops are either they produce continuous output or no output at all. Okay, now when to use the infinite loops? Then there are many use cases of infinite loops which are actually listed here. Okay, one of the use cases, like when you play a game on mobile, right? The application or game will not exit, will keep on running until you exit it from it, until you exit from it, right? So that's one of the examples, maybe, right? Let's let's look at the general syntax of infinite loops with while, for and do while. When these loops will can result into the infinite loops. So main thing here is the validation condition, this validation condition. Okay, now when this validation condition is true every time, at that time then this body of statements will be executed. So यहाँ पे अगर while one का मतलब हमें पता है every non-zero number is treated as a true in programming language, so this will be always true and this will execute this body infinite times. यहाँ पे तो हमने वो condition लिखा ही नहीं है, that means what, it will be true for every time, right? Yes, this is valid syntax. इसका मतलब होता है blank statements, these are the blank statements. Okay, then this is also while one means what, it's true every time. Let's go to the IDE to look at the example. So as we had that on slide, right, I'll just maybe try to quickly cover the infinite loops. लेट्स से कि हमको यहाँ पे प्रिंट करने हैं वैल्यूज जो 5 के मल्टीपल्स में होंगे. सो 0, 5, then 10, 15, 25, all that, right? In multiples of 5. So हम क्या करेंगे, while 1 मतलब इट्स इनफाइनाइट लूप, क्या करेगा, प्रिंट पहले 5 0 प्रिंट करेगा, आई 5 होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 10 होगा, 10 प्रिंट होगा. दैट्स वाई इट विल जस्ट गो इनटू द infinite loop. Yeah, see, this is printing the all the numbers which are in multiple of 5 but infinite times, it is not even ending it, right? So this is what infinite loop means, जो कभी खत्म नहीं होगा, ये continuously output एक तो print करेगा या फिर नहीं print करेगा. Okay, so this was the while loop. Similarly, in a for loop, same thing, we can do it like this. Okay, by putting no conditions here, we can also put some number here. Okay, that's not, so somehow this, the condition here should be true. These are called as the blank statements and valid, remember. So it is printing infinite times, right? So the similarly in do while loop, you will have a true condition here while 1 and it will print the infinite numbers, right? Yeah. Now why do we need the infinite loops? It's let's take a simple example of calculator. Let's say कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, दैट इज अ कैलकुलेटर. वो क्या करता है कि इट विल गिव यू ए ऑप्शन कि आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, और कौन से नंबर्स पे इट विल आस्क यू, आप दो नंबर इंटर कीजिए और उसके बाद एक मेनू कार्ड, जैसे आपको मेनू कार्ड आपको मिलता है, राइट, दैट यू विल हैव द ऑप्शन कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन उस नंबर्स पे you need to perform, right? And then you need to select that number and then accordingly it will go here, and then using the switch
it will perform plus, minus, multiplication, division, right? But अगर आपको ये दोबारा करना है तो ये प्रोग्राम दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा, इट विल रन इट अगेन। सी आई हैव केप्ट लाइक वाइल वन, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको एक कंटिन्यू करना है, डू यू वांट टू यूज इट कंटिन्यू विद द कैलकुलेटर। अगर आपने हाँ बोला, इफ यू पुट यूज इज इक्वल टू वन और नॉन जीरो नंबर, तो फिर से ऊपर जाएगा, इट विल एग्जीक्यूट द व्हाइल लूप। बट इफ यू से यूज, यहाँ पे अगर जीरो आपने इंटर कर दिया, so it will come out of the loop. Let's see, maybe, right? We'll try to execute it. Yes, so it has asked for to enter the two numbers. Let's say I have entered 3 and 4. So when I enter it, right, it will give me some prompt. ये क्या है? कैलकुलेटर है। अगर आपको एडिशन करना है तो 1, सब्सट्रैक्शन करना है तो 2, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3, डिवीजन करना है तो 4. लेट्स से आई इंटर मल्टीप्लिकेशन, so it will give me 3 into 4 is what? 12. इट विल आस्क मी वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस कैलकुलेटर और नॉट। अगर मैंने जीरो एंट्री किया तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इफ आई से इंटर वन, it will again give me the another option. Let's say 5 minus 7, I print it, right? It will again give me the menu. If I say add, it will give me the addition, but it will again ask me, do you want to continue? Yes. Let's say 9 and 8. Yes, I want to maybe perform the addition. So let's say subtraction, right? This is what 9 minus 8. But I'm done with whatever I had, right? And I want to quit. So I just say zero, and see, it just exited from the loop. So that's how the infinite loops are supposed to be implemented. Okay. Now let's look at the common errors, what you should basically avoid when you are dealing with the loops. Okay. We will cover for and then while loop. Now let's look at the while loop. सबसे पहला वाला एरर है कि यूजिंग इक्वल टू इंस्टेड ऑफ व्हाट? इक्वल टू। आपको कंपेयर करना होता है, लेकिन बाय मिस्टेक आप क्या कर देते हो? दो इक्वल टू की जगह पे एक ही इक्वल टू लिखते हो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी ये वाला जो एग्जांपल है, इन दिस एग्जांपल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू अपना, सो इन दिस एग्जांपल इंटेंशन इज टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 100 टू 1 टू 100। यहाँ से 1 टू 100 तक सभी नंबर्स हमको प्रिंट करने हैं, लेकिन खाली कौन सा नहीं प्रिंट करना है? वी डोंट वांट टू प्रिंट द 25 हमको प्रिंट करना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि, तो अगर आपको यहाँ पे 25 प्रिंट करना नहीं, व्हाट डज दैट मीन? कि आपको जब i इज इक्वल टू 25 होगा तो यूनिट टू जस्ट से कंटिन्यू, नहीं मुझे प्रिंट नहीं करना है भाई, 25 के लिए कंटिन्यू करो। लेकिन बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे क्या किया? i इज इक्वल टू 25 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? वो हर बार फॉर लूप के पास अंदर आएगा, i इज इक्वल टू 25, ये उसको ट्रू मिलेगा, इट विल प्रिंट दिस, i विल बिकम 26, अगेन ऊपर जाएगा, फिर सो दिस विल indefinite, this will be a indefinite loop, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। see see it is indefinite loop, right? मिस्टेक क्या था यहाँ पे? यू जस्ट मिस्ड दिस पॉइंट। सो अगर आप ये करोगे, सी इट विल जस्ट सिंपली प्रिंट द 100 तक का वैल्यूज, बट it will not print the 25. For 25 it says do not want to print 25, so continue, is it? So this is very much important when you are dealing with equal to and the compare signs, right? The next part is, let's say when I comes, आपको अभी 1 टू 100 में से 1 टू 24 नंबर ही प्रिंट करने हैं, और जैसे ही 25 आ जाएगा यू जस्ट वांट टू एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या? ब्रेक। तो जैसे ही 25 आएगा यू विल से डन विद द फर्स्ट 24 नंबर, सो एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राइट? इट विल कम टू द फॉर लूप i इज 1, यहाँ पे दिस i का वैल्यू भी 25 हो जाएगा, सो इट्स ट्रू, इट विल प्रिंट दिस एंड इट विल इमीडिएटली कम आउट ऑफ दिस। सो ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, see, this only executed this. Why? The only mistake what you made is equal to instead of equal to equal to. See, now it printed only up till 24, and at the 25 it says we are done. So this is very much important, guys. The next part is like misplaced or bogus semicolon. Semicolon आपने गलत जगह पे अगर रख दिया, right? So what will happen? अभी देखो यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि मुझे i के वैल्यूज प्रिंट करने 1 टू 100। ओके, नाउ इफ आई रन इट, व्हाट इज हैपनिंग? डायरेक्टली 101 प्रिंट किया उसने, क्यों? सी व्हाट इज हैपनिंग? i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 100, ठीक है। i प्लस प्लस करने के पहले यहाँ पे कब जाएगा? अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा तो यहाँ पे सेमीकोलन, इसका मतलब क्या? ये लूप
100 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है और आई का वैल्यू 101 आने के बाद ये प्रिंट हुआ है. सो दिस पार्ट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ फॉर लूप. सो हमको यहाँ से क्या निकालना है, सेमी कॉलन. सेमी कॉलन अगर आपने गलत जगह पे रख दिया, सो इट विल बेसिकली स्पॉइल योर कंप्लीट प्रोग्राम. सी, ओके, that is one of the thing. The next thing is like wrong, यूजिंग रॉन्ग कंडीशनल स्टेटमेंट्स. आपका इंटेंशन है कि आपको 0 to 9 तक प्रिंट करना है. 0 to 9 तक प्रिंट करना मतलब आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, आई लेस देन 10, लेकिन बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, आई इज ग्रेटर देन 10. सो ऑब्वियसली वो कुछ करेगा ही नहीं, राइट. इट विल बी लाइक जस्ट गो आउट ऑफ इट. करेक्ट. सो करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज व्हाट, लाइक दिस. See, is it? The next part is like off beat, off one byte, one off one error, right? What does that really mean? आपका इंटेंशन है 0 to 9 ही प्रिंट करना है, बट बाय मिस्टेक आप 10 को इक्वल टू कर देते हो, तो ये क्या करेगा, 0 to 10 तक प्रिंट कर देगा. सी, बट अगर आपको खाली 9 तक प्रिंट करना था, यू शुड हैव लेस देन. सो दैट्स हाउ इट इज. सो रिमेंबर, दीज आर द कॉमन एरर्स विद द फॉर लूप जो आपको पकड़ में नहीं आएंगे. आपका प्रोग्राम रन होगा लेकिन आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा. सिमिलरली व्हाइल लूप में है बोगस सेमीकोलन रिजल्ट्स इनटू द नो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन. सी, इफ यू लुक एट हियर, द ओनली मिस्टेक डन इज व्हाट, दिस सेमीकोलन. इस सेमीकोलन की वजह से क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, दिस विल बेसिकली एग्जीक्यूट इट इनफाइनाइट टाइम्स. यही इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि आई इज लेस देन 10 विल बी ट्रू फॉर every time. So I less than 10, it will now print the correct values. Okay, see, and if we just keep semicolon here, it will not print anything. Yeah, it will be in infinite loop. So this is one thing. Now no increment statement will result into the infinite loop. अगर आपने increment statement नहीं लिखा है तो infinite loop में जाएगा. I less than 10 है, आप I print कर रहे हो लेकिन आप भूल के आ गए हो यहाँ पे I plus plus. अगर नहीं लिखा तो वो infinite loop में जाएगा, right? I don't want to execute it because it's pretty simple. Then no curly braces will result into infinite loop. अभी आपने क्या किया यहाँ पे, right? See, you are saying while I is less than 10 और आप बोल रहे कि I print करो और उसके बाद I plus plus करो, लेकिन क्या हुआ, आपने यहाँ पे curly braces मिस कर दिए, this braces, right? What does that mean? while loop के लिए खाली इतना ही है, this I plus plus is what, out of the while loop. अगर आप इसको print करोगे तो it will just maybe loop out infinite, right? 1 1 1 1 print करते जाएगा. So the correct way of doing is what, put into the curly braces. Okay, so अगर यहाँ पे ऐसे करोगे तो then it will print it the correct value. So these are some of the logical errors which you should avoid while working with the loops. Let's go back to the slide. We already saw this. We already saw this, right? Now this is all what I had it from this video. In next video, we will look into the one-dimensional array, right? That is very, very important. That is one of the user-defined data type. So guys, help to spread the knowledge by sharing it with the students, with the needy people, right? And do not forget to like, share and subscribe to the channel to receive the new updates on the next videos. Thank you for watching this video. Happy learning with the GravityTech. Have a great day ahead. Thank you.